Hello everyone, welcome back to our classes. Today we are going to learn a very nice topic which is pollination and I believe ये botany का सबसे cute chapter है ना? The most colorful and the most cutest chapter. So let's not waste our time and let's begin. First let's understand what is pollination. Pollination is a word that's coming with respect to pollen grains. अब pollen grains क्या है? Pollen grains are those yellow colored dust that you see inside the flowers. And these pollen grains are microscopic in nature. How they are? They are microscopic in nature. आप इनका structure देख नहीं सकते हो. You can only see their structure under microscopes. And they appear to be so beautiful, you know. Sometimes they are spiny. Sometimes they are very much plain. And even in this pollen grains, you have two cell walls. The outer cell wall is called exine and the inner cell wall is called intine. Exine is mostly spinous in nature, that is it is pricky. इसके ऊपर कांटे होते हैं. Intine is mostly smooth, which holds the nutrients inside. Okay. अब समझते pollination है क्या? Pollination is the transfer of pollen grains. So it is nothing but transfer. So transfer मतलब क्या? From one, it could be from one flower और इट कुड बी टू अनदर फ्लावर. या तो एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है या फिर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हो रहा है. सो बेस्ड ऑन दैट द पॉलिनेशन इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. वन इज क्रॉस पॉलिनेशन एंड अनदर वन इज सेल्फ पॉलिनेशन. अभी इसका जरा ये भी देखते कि एक्चुअली कौन सा होता है. So anther. So from anther to the stigma of the flower, you need to understand stigma. Stigma is the site where pollination happens. So from where is it going? It's going from anther to stigma. Anther is the male product, male reproductive structure, and stigma is the female reproductive structure. So it is nothing but it is a type of sexual reproduction only. Now let's understand what are the types. So पहले तो हमने देख लिया pollination मतलब it is transfer of pollen grains from anther to stigma, that is from male to female it is going. Okay, so you need to understand pollen grains are male in structure, they're not female. Okay, now autogamy. Auto जैसे हमने न्यूट्रिशन में भी देखा था, ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ. सो सेल्फ गैमी. गैमी मीन्स व्हाट? इट इज अ टाइप ऑफ मैरिज और यू नो अ यूनियन. सो सेल्फ तो मतलब सेल्फ मतलब ये खुद ही को ही पोलिनेट कर रहा है. ऑटोगैमी मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन which happens within the same flower. So pollen is transferred from anther to the stigma of the flower. See, so it is, you know, it is self. It doesn't have to depend on anybody. So this is called autogamy, wherein the same flower is involved in pollination. It doesn't require another flower for any of the assistance. तो अभी ये देखिए जरा. Example is pea, wheat and rice. And also you need to understand this. Pea is the best example to understand pollination. बिकॉज ये काफी कम टाइम में आपको रिजल्ट्स देता है. तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपने देखा भी होगा, एक लॉ भी है ना, तो वाई पी वॉज यूज्ड बिकॉज ऑफ द क्विक रिजल्ट्स इट गिव्स. नेक्स्ट, फर्स्ट तो हमने देख लिया सेम फ्लावर का जो था सेल्फ पॉलिनेशन. नेक्स्ट इज गीटोनोगैमी. गीटोनोगैमी का मतलब क्या होता है? गीटोनोगैमी मीन्स डिफरेंट, अदर्स. सो इट डिपेंड्स ऑन अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट. अभी ये चीज समझनी चाहिए, गिटोनोगैमी को चाहिए दूसरा फ्लावर बट इट शुड बी फ्रॉम द सेम प्लांट. इट्स अ कंडीशन. ओके, सी दिस हियर वी सॉ इट वाज द सेम प्लांट and the same flower, but in geitonogamy it is same plant but different flowers. So they are like the family tree के अंदर ही ये चल रहा है. ठीक है. So pollen is transferred from one anther of one flower. See this, from one anther of one flower to the stigma of another flower, which means same plant different flowers. So इसके examples क्या है? इसके examples है maize and castor. Moving on to the next one, xenogamy. Xenogamy is completely different. It means that plant भी different होने चाहिए और flowers भी different होने चाहिए. ठीक है, मतलब but they should belong to the same species.
See now, pollen is transferred from anther of one flower of the stigma of a flower on a different plant of the same species. So example is papaya. So you might have seen this. कुछ पपाया के पेड़ों पर ना पपाया होते हैं और कुछ के ऊपर पपाया नहीं होते हैं. जिन पे पपाया होते हैं वो यूजुअली फीमेल फ्लावर्स फीमेल प्लांट होता है, और जिन पर पपाया नहीं होते वो मोस्टली वो मेल ही होता है, मेल प्लांट होता है वो. ठीक है, आई होप नाउ दिस इज क्लियर. Self means same flower, same plant. Geitonogamy, same plant, different flowers. Xenogamy, different plants, different flowers, but same species. Okay. अब ये तो हमने देख लिया बेस्ड ऑन द सोर्स, जहां पर इसका सोर्स मिल रहा है और वहां पर पॉलिनेशन हो रहा है. अब एक और कुछ होता है, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको एजेंट्स की जरूरत पड़ती है. यू नो दे कैन डू इट ऑन देयर ओन, सो दे विल रिक्वायर अदर्स टू हेल्प देम. So those kind of agents are known as pollinating agents. Pollinating agents कौन होते हैं? जो दूसरों को हेल्प करते हैं इन पॉलिनेशन, मतलब खुद प्लांट्स को ही हेल्प करते हैं. फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस एनिमोफिली, एनिमोफिलस प्लांट्स. एनिमो का मतलब होता है विंड या फिर हवा. फिली मतलब इट इज अ काइंड ऑफ अफेक्शन. ओके, तो इसमें क्या होता है? विंड. Anemophily matlab it is a wind pollination wherein wind will assist them. Assist who? Assist the plants to get pollinated. तो अब जब wind की बात हो रही है तो किस टाइप के pollen grains होने चाहिए? इसके काफी light होने चाहिए, है ना. If they will be heavy due to gravity, what will happen? They will just fall there, isn't it? And they will not be and there will be no successful pollination, isn't it? तो इसको क्या होने चाहिए? पोलन ग्रेन्स बहुत लाइट होने चाहिए, प्लस दे शुड ऑल्सो हैव सम सॉर्ट ऑफ क्लिंगीनेस ऑन देम. कुछ इस टाइप के कांटे जैसे होने चाहिए, सो दैट दे कैन गो एंड दे कैन एक्चुअली बी प्लेस्ड इनसाइड द प्लांट. Pollen grains are light, dry, small and smooth and produced in large numbers. Now why they are produced in large numbers? Why? Because यहाँ पर रिस्क नहीं लेते ना. Imagine if there are hundreds of pollen grains being dispersed, there are chances only 60 or more than that 70% may actually go waste. They may go invalid. At least 30% तो help कर देगा ना to maintain the population. So that's the reason they are large in number. Plus look at this how they are light, dry, small and then smooth. अब ये देखिए कुछ species में ऐसे होते हैं और मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में ना बहुत सॉफ्ट होते हैं ये देखने में. दे विल बी वेरी स्मूथ विथ नथिंग ऑन देयर आउटर सरफेस. Flowers are small, inconspicuous, without scent and nectar. Obviously, now why do they not want any kind of scent or nectar? Because यहाँ पे insects का कोई रोल नहीं है. Only if there is a biological creature involved, it needs to have a beautiful, very nice aromatic scent and nectar होना चाहिए. But जब यहाँ पर insect ही नहीं है तो nectar और फिर scent का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है ना, because it is going through an abiotic component like wind. तो wind को तो ना smell से मतलब है ना किसी से मतलब है, उसको खाली light और dry होना चाहिए. If it's light and dry, it will smoothly go away. Stigma is large and feathery. This is the key point you need to understand. You need to keep in your mind. Stigma is large. Why is stigma large? Because the air does not have a very fixed direction कि हाँ मैं इधर से ही जाऊंगा और ऐसे में stigma के अंदर चला जाऊंगा. Not at all. So stigma will be large so that most of the pollen grains which are in the air will actually be received on this stigma. That's the reason stigma will be large. अब इसके example क्या है? Grass, maize and wheat. So if you see this, grass, maize and wheat, they all are what kind of seeds? Monocotyledon है ना ये. तो आपको ये चीज समझनी चाहिए. Most of the anemophilous pollination that happens in the nature, it happens mostly in monocotyledons rather than dicots. अब next है hydrophily. जैसे नाम है hydro. Hydro means water. Something that has affinity towards water. So it is water pollination. तो अभी water pollination का मतलब क्या हो गया? It should be with aquatic plants, isn't it? तो pollen grains are small, light and non-sticky.
ये कैसे है, बिल्कुल नॉन स्टिकी है ये, ओके। तो इट मीन्स क्या है इसका मतलब, अगर ये लाइट और स्मॉल नहीं होंगे तो क्या होगा, पानी में डूब जाएंगे, है ना। there are chances it will sink inside the water and there will be no successful pollination. So they have to be light, small, and they should be non-sticky so that they don't get stuck on any of the substrate. उससे क्या होगा, pollination unsuccessful हो जाएगा. They are carried by water from anther to stigma. Very slowly they go through the water. And then इसके examples क्या है, Vallisneria and Zostera. Please remember these two, because for your higher studies these two are certain species, plants which is very easy to experiment on. Next, zoophily. Zoo में कौन रहता है, एनिमल्स. तो अब यहाँ पे कौन आ रहा है, बायोलॉजिकल क्रीचर्स आ गए. जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, बायोलॉजिकल क्रीचर्स इफ दे आर प्रेजेंट, व्हाट डू वी वांट अ वेरी गुड सेंट so that the bees are attracted towards them. सेंट हो गया, उसके बाद क्या चाहिए, जूस भी तो चाहिए ना पीने के लिए. सो इट इज नेक्टर, अमृत की बूंदे, है ना. pollen grains are large, heavy, sticky and spiny. अभी spiny क्यों है, so that they can actually get stuck to these insects legs or maybe insects body, and when they are visiting that plant again or the other different flowers, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे सारे पोलन ग्रेन्स वो फ्लावर के ऊपर छोड़ के चले जाएंगे. So see, this is a key point here for zoophily, and most of the time zoophily is most favorite topic, इसी के बारे में most of the times पूछा जाता है. एक तो zoophily और एनिमोफिली के इसके हाइड्रोफिली के बारे में ज्यादा पूछा जाता है. pollen grains are large, heavy, sticky and spiny. Large होते हैं क्यों, because already they have somebody to carry it, right? So they don't have to be light and depend on wind or water. Then heavy भी है क्यों, क्योंकि animals can carry them. Next, sticky क्यों, so that when they're visiting one flower, so it gets stuck on their body parts, and when they're visiting the other flower, what happens, they leave that pollen grain there and there is a successful pollination that happens. Next, flowers are large, showy, colorful, fragrant, and they produce nectar. See, this is the characteristic feature of zoophilous flowers. They should be large, jitna bada, just like these sunflowers, hibiscus, they're so big, isn't it? The more bigger they are, the more faster they attract the agents towards them. जितना big, बड़ा, showy and like very bright colors, उससे क्या होता है, ये सारे pollinating agents क्या होते हैं, आकर इनसे attract होते हैं, and they will literally stay there for some time, because they love that smell and the nectar, and even this nectar here will be very sweet. And मतलब, as per the research, they say that the nectar of this zoophilous flowers are very much sweeter than the other fragrant flowers. अब ये देखिए, इसके examples कौन से, hibiscus और sunflower. Any flower, just understand this with a basic term, any flower which is showy, big, vibrant और बहुत सारे bright colors है, mostly pastel colors और dark colors, वो किसके लिए है, वो zoophilus के लिए. It is to attract the bees and other insects. Next, ornithophily. You might have heard of this man, Salim Ali, maybe in your in your school life. इनके बारे में एक चैप्टर आता है, सलीम अली. ये कौन थे, he was an ornithologist. उनका नाम क्या था, मतलब उनको एक निकनेम दिया था ना, पक्षी प्रेमी. He was a bird lover, isn't it? तो ये ornithologist क्या है, ornitho means somebody who studies about birds, and when we are talking about ornithophily, it means pollination by birds. Look how beautiful it is, है ना. तो most of these flowers are also like zoophilous flowers. ये भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, ब्राइट होते हैं, बड़े होते हैं दिखने में, बट इनमें ना एक थोड़े से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है. जैसे यहाँ पे देखिए, फ्लावर्स आर लार्ज, ट्यूब्यूलर, ब्राइटली कलर्ड एंड रिच इन नेक्टर. अब ये ट्यूब्यूलर क्यों है, बिकॉज बर्ड्स हैव बीक्स, एंड बीक इज हाउ इट्स लॉन्ग एंड पॉइंटेड, इजंट इट. यहाँ पे पॉसिबल है क्या लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक लेके आना, इट्स नॉट पॉसिबल, इजंट इट. यहाँ पे खाली प्रोबोसिस वर्क कर सकता है.
इनका इंसेक्ट्स का, बट यहाँ पर बीक्स काम करती है, इसलिए द फ्लावर्स आर मोस्टली ट्यूब्यूलर, दे विल बी फनल शेप लाइक दिस. तो इससे क्या होता है, दे कैन एक्चुअली पुट इन देयर बीक्स or maybe the proboscis inside just like butterflies, and they can take out the nectar from there. Pollen grains are relatively large and sticky, same as that. अब ये देखिए ऑर्निथोफिली और जूफिली मोस्टली सेम है, खाली एक डिफरेंस है इसमें, जूफिली में इंसेक्ट्स काम करते हैं और ऑर्निथोफिली में बर्ड्स काम करती है. जस्ट बिकॉज ऑफ द एजेंट्स दैट आर इन्वॉल्व हियर, इवन द शेप ऑफ द फ्लावर्स आर डिफरेंट. यहाँ पे देखिए शोई है और ये मोस्टली ओपन रहते हैं, किसमें, जूफिलस flowers में. But when it is an ornithophilous flower, it will be like a tube structure, like a funnel. Okay, that's the major difference you need to know. बाकी सब सेम ही है, इनके pollen grains भी large और sticky होते हैं. Example is Butea and Erythrina. Okay, now I hope you know which bird is this. This is a hummingbird, the smallest bird in the world, isn't it? And its wings are so fast, you actually need to go on ultra slow motion to watch their wings. ये इतना fast इनके wings काम करते हैं. Okay, next cleistogamy. This is one such peculiar और एक थोड़ा सा exceptional case है. क्यों? क्योंकि आज हम देखेंगे कि इसमें ऐसा different है क्या बाकी flowers से. This is known as closed flower pollination. अब तक आपने सारे flowers open देखे, they were open to everyone, but this particular cleistogamous flowers are closed flowers, मतलब ये बंद रहते हैं हमेशा, ये खुलते नहीं है, बंद ही रहते हैं. Pollination occurs in a closed flower. See how peculiar and exceptional is this. Closed flower के अंदर pollination चलता है, flower does not open, बंद रहता है. ये मेरे को ना ऐसा लगता है जैसे कि it is like a introvert of all the flowers, क्योंकि ये बंद रहता है most of the times, है ना. It ensures self pollination and seed set even in the absence of pollinators. अब ये देखिए, ये जो flower है ना, इसको pollinator की जरूरत नहीं है. अब सीधी सी बात है ना, if it is closed, how will anything even come inside this? It's harder to go in, isn't it? So what happens? It tries to self pollinate itself. अब कुछ अंदर नहीं आएगा, तो मतलब इमेजिन कीजिए, you are inside a room and it's closed completely. Will you expect somebody else to come in? Not at all. आप खुद से ही काम करोगे ना अपना. तो ये फ्लावर भी ऐसे ही है, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप सा. It ensures self pollination and seed set even in the absence of pollinators. अगर कोई pollinators भी नहीं आ रहा, it knows when there are optimum conditions, it will start to pollinate itself. Okay, इसके examples है Viola oxalis, Comelia and Arachis, the peanut. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका पीनट है, बिकॉज यू कैन फाइंड दिस कॉमनली इफ यू गो समवेयर नियर वेयर देर इज red soils, or where there's a dry land with low rainfall, you can go and find these peanuts. और मोस्टली ये मॉनसून के थोड़ा पहले के टाइम आप जाएंगे ना, तो आपको ये पीनट के फ्लावर्स भी दिख जाएंगे. दे आर एक्चुअली क्लोज्ड इन नेचर एंड पॉलिनेशन हैपेंस विद इन इटसेल्फ. नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ नीट के पॉइंट्स हैं जो हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं. नीट पॉइंट, ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी डू नॉट रिजल्ट इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. वी नो दिस. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कब नहीं होता है? when there are no different kind of parents involved. Same species है, same चीज चल रही है, so what happens? It does not have any kind of genetic recombination. But in xenogamy it does. Why xenogamy? क्योंकि ये different plants में जा रहा है ना. So what happens? Different kind of characteristics will also be seen in the flowers and also in the fruits. जहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है वहां पर आपको ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं दिखता है, बट जीनोगैमी में आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक से ही पता चल जाएगा कि दिस इज एक्चुअली अ जीनोगैमी काइंड ऑफ पॉलिनेशन वेयर देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व. कभी कभी क्या होता है ना, flower could be red in color and another one could be white in color, but they are of the same species. Okay, तो इन दोनों का जब मिलन होता है या इन दोनों का जब मिक्सचर होता है, what happens? What color will it give you? It gives you pink color, right? तो यहाँ पर xenogamy में ये kind of genetic recombination होता है. दूसरा एक और neat fact जो है, most common types of pollination in nature are anemophily and zoophily, है ना. क्यों? क्योंकि wind is always present, wind can never disappear. Then zoophily, plants are also there, even they, sorry,
इवन जूफिली, एनिमल्स आर ऑल्सो देयर, एनिमल्स को भी तो खाना चाहिए ना, सो दे विल बी डिपेंडेंट ऑन each other. So these two are the most common, and it happens in the most number on this planet. Next, cleistogamous flowers are always bisexual. So true. Why they should be bisexual? Because they are not depending on any other plant or any other pollinators, isn't it? Cleistogamous खुद ही अपने आप से self pollinate करेगा, तो flowers are always bisexual in nature. Another thing you should be knowing that in xenogamy most of the flowers are all, you know, they are this one, they are not bisexual. Okay, एक मेल प्लांट अलग ही होता है, एक फीमेल प्लांट अलग ही होता है, मोस्टली मोनिशियस. नेक्स्ट important, पोलन पता ही है, माइक्रोस्पोर होता है, इट इज अ मेल गैमेटोफाइट, एंड स्टिग्मा इज द रिसेप्टिव पार्ट ऑफ द pistil, and this pistil is what, it is the फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ओके, चीज समझिए, स्टिग्मा जो है वो फीमेल से रिलेटेड है बिकॉज इट इज अ रिसेप्टिव, जहां पर वो उसको रिसीव करना है. जैसे आप एयरपोर्ट पे जाओगे, आपको कोई रिसीव करने आता है ना, तो स्टिग्मा भी बिल्कुल ऐसा ही है. स्टिग्मा ऑल्सो रिसीव्स द पोलन ग्रेन्स, it actually welcomes them inside the pistil. I hope it's all clear. कोई doubt हो, the comment section is always open. Please go there and then comment, and any of the topics if you want, you can actually go there and you can type it in. I'll make sure कि एक ऐसी वीडियो बन के दोबारा आए, या फिर हम लोग उसको अपलोड कर सके. Okay, this is it from my end. Thank you so much for being here and until this end, and see you in the next video. Thank you. Bye. Happy learning.